host for the day, Vikas Mahara, and I welcome you all to our today's open mic live session Awaz presented by My Story Trust. So before starting this session, I would like to thank you all for giving such a great response on our previous sessions, which were on the topic child abuse, and the other another one was on depression. So a big thanks for giving such a great response. And अगर अभी तक आपने उनको नहीं देखा, then you can visit our Facebook page, which is by the name My Story. वहाँ पे आप जाएंगे, आपको recent post के अंदर हमारे दोनों लाइव सेशन दिख जाएंगे. तो इस लाइव सेशन को अटेंड करने के बाद उन्हें भी जरूर देख लेना. And now, like my co-anchor Tushar, to introduce you all about what My Story is. बहुत बहुत शुक्रिया. So presenting before you another live session and myself Tushar Malhotra again coming with the live session, and this topic is LGBTQ. And My Story is a platform where every story is heard, every story matters, and we try to give every story a better climax, and if not climax, then a better interval. सर यहाँ पे हम अलग अलग सोशल टॉपिक्स पे बात करते हैं, उसके ऊपर एक अच्छा सा ओपिनियन लेते हैं स्पेशल गेस्ट के साथ. तो हमारे इस बार के गेस्ट जो है वो है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस उत्कर्ष, फेलिस फेला, गर्वित एंड रुशाली. Thank you so guys, much we are very for being pleased here. to have you all here. Alright, so अब हम बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक के बारे में, बट उससे पहले मैं 4 लाइनें बोलना चाहूंगा. तो इरशाद क्या है, पहले मुझे पता नहीं था मुझ में अलग क्या है. पहले मुझे पता नहीं था मुझ में अलग क्या है. जब मुझे पता चला तो ये समझ नहीं आया इसमें गलत क्या है. पहले मुझे पता नहीं था मुझ में अलग क्या है. जब मुझे पता चला तो ये समझ नहीं आया इसमें गलत क्या है. लोगों ने मुझे ठुकरा दिया कहकर ये अरे दूर जाना यार. लोगों ने मुझे ठुकरा दिया कहकर ये अरे दूर जाना यार. मेरी क्या गलती थी, मैंने तो सिर्फ उनसे किया था प्यार. ऑलराइट गाइस, थैंक यू. ऑलराइट, सो आप में से बहुत लोगों को आइडिया लग गया होगा कि आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो होने वाला है होमोसेक्सुअलिटी, और आई शुड से LGBT, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर. ऐसे 4 वर्ड जिनको सुन के बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता है अरे वो लोग. लेकिन वो हम ही हैं जिन्होंने इस टॉपिक को इतना सेंसिटिव बनाया है. वो हम ही हैं जिन्होंने इन लोगों को एक अलग कम्युनिटी बनाया है, और वो हम लोग ही हैं जिन्होंने इन्हें अपने आप से डिफरेंशिएट किया है. तो आज हमारे साथ 4 पैनलिस्ट हैं जो कि अपने व्यूज शेयर करेंगे इस टॉपिक के ऊपर, और हमें बताएंगे कि कैसा रहता है इस कम्युनिटी के अंदर, क्या उन लोगों को एक्सपीरियंसेस शेयर करने को मिले, क्या क्या उन लोगों के साथ होता है. वो सारी चीजें वो हमारे साथ डिस्कस करेंगे. तो आप लोग इस सेशन के एंड तक बने रहेगा. सो नाउ लाइक माय को-एंकर तुषार टू आस्क हिज फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम आवर पैनलिस्ट. Okay, before proceeding, I would like our technical team, which have prepared a video, wonderful video for this session, live session. So I would like to request कि वो एक बार वीडियो प्ले कर दी जाए. उसके बाद we will be proceeding with the session. And guys, how are you feeling? अबे लॉन्डो में टाइम का जाके छक्का बन जा, वहीं जाके शामिल हो जा. लहरा लहरा के चल रहा है. क्या ये कहाँ से लाया तू ये साड़ी? ठीक है, तू नहीं है ना, तू क्यों पहना तूने? छक्का बना तेरे को. इसको ये सब नहीं करने का. उतर, अभी उतर. जाओ जाके हिजड़ों की फौज में शामिल हो जाओ. तुम बीटे प्रजाति समझे? छक्के हैं ये छक्के. अबे चाल तो देखो इसकी, पता ही मीठो वाली है. So guys, I hope आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी. Alright, so how was it? Please share your views first. Hello. Utkarsh, can you hear us? How was the video? It was good. It was nice. It was a nice attempt. Alright, so Tushar, you can come up with the first question now. Okay, so my first question is for Garvit. So Garvit, the thing is that कि जब आप सुनते हो कि यार ऐसे ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोग हैं यहाँ पे, जो कम्युनिटी है ऐसे वो बोलती है, सवाल करती है कि यार ये ऐसा है, ये वैसा है, ये ऐसा है, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है हर एक इंसान के लिए कि वो कैसे अपने आप को कम फॉरवर्ड करे अपने पेरेंट्स के सामने, अपने फ्रेंड्स के सामने, अपने रिलेटिव्स के सामने. तो जब आपने ऐसा किया, जब आपने अपने आप को सबके सामने रखा, तो हाउ डिड यू फील
at that time? And what message do you want to transfer to youth out there जो अपने आप को express करना चाहते हैं लोगों के सामने? So what are your opinions on that? So first of all, thank you for the question. So basically, I was, going through this journey of exploration like everybody else does. And before I explain any further about this entire journey, I would like to say that this journey is never ending. So I have been asked this question many times, how it feels and, how long do you think this journey is going to be? So this journey is first of all never ending, the journey of self-exploration and to identify yourself to one or the other identities. Now, so my journey started right from the very beginning. Like when I was born, I had no idea about anything. However, later on in the like when I was growing up, I could see some things, that in myself that were distinct from other people. Like for example, the gender binary that is being pushed into the society, it was distinct from that, and I could easily make that out. However, I did not know what's the right terminology for it because everything that is not going within the streamlined characteristics of the society has been considered outcast, as we know very well. Exactly. When I came in ninth grade, after ninth grade, I had this I had this difficulty of accepting what's there in me, what's different in me. So, for example, if in school you would like to play with girls and being a boy to play with girls was something which was weird, not just to the children but also to the teachers. And it did not came from inside the children, that this is weird. It was just taught to them by the teachers, by the parents, or by the society in general. So what basically happened was when I came into ninth grade, I began getting some education on this topic. I began to educate myself, and at that time, my friend asked me about myself. But I could not really reply very well because I did not want to, expose myself to any danger. Because my schoolmates were very homophobic. They were very into bullying and everything. So I did not want to put myself in danger that way. And so likewise, I told my friend, she kept on asking me so many questions that I ultimately had to accept it. I got frustrated. So I said yes. That yeah, I don't think I belong to the binaries of gender. And so, however, at that time, the education that I had, because being in ninth grade, I did not research in all of these on all of these topics in advance in an advanced level. Therefore, I just thought that I belong to the arena of gay, and yeah, so that's how I came out to her. However, I told her not to tell anybody about it, but it later on happened that everybody knew about it. Everybody came to know about it. So that privacy or that thing that I wanted to conceal it from and not to get into the dangers that were there in my school. I did not get the opportunity to be discreet and be concealed there. And later on, when I came into college, we were very open about all of these things. So thankful to this, kind of. Maybe please, I'm stopping you in between, but there's a request. So it's a request from all of you. Please try to be bilingual. Okay, क्योंकि हमारी audience both Hindi, English दोनों की है. Okay, Yeah. please try to be bilingual. All right, you can continue. Sure. So when I came into college at that time, हमने एक collective establish करी थी. So basically that's वो एक group है people का जहाँ पर आप एक दूसरे से बात कर सकते हैं इस topic के ऊपर और you can basically interact. We hold discussions every Friday to just talk about all of these things. क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि everybody is educated about this. We need to even amongst the queer, we ourselves don't know what all genders exist beyond the binary roles. तो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि अगर हम कम्युनिटी से भी बिलोंग करते हैं तो हमें एजुकेट करना जरूरी है अपने आप को इस टॉपिक के ऊपर एंड अगर आप कम्युनिटी बियॉन्ड है तो ये काफी जरूरी है बिकॉज आई बिलीव दैट इट्स नॉट जस्ट बिकॉज दैट आई बिलोंग टू द कम्युनिटी सो आई हैव टू बी मोर कंसर्न्ड अबाउट द जेंडर मुझे अगर मैं कम्युनिटी से बाहर भी हूँ तब भी मुझे जेंडर के बारे में कंसर्न होना चाहिए अपने सभी के लिए होता है Right. All right. That was a very great answer, and we are proud to have people like you. Seriously, we mean it. All right. Okay. So my next question is from Utkarsh. Bro, how was the first time when you got to know that you are a gay or you belong to this community? How was it? How was your reaction on that?
And first of all, cheers, Utkarsh, cheers to you, kudos to you. Matlab, you came out with such a thing, and you had a great response on your YouTube channel when you posted Yeah, the video seriously. about this, and it was really a great thing. That when I saw that, matlab, I was really impressed. Yeah, I was really impressed by Thank you. you. Thank you. Cheers to you. Yeah. That's Back really to the sweet of question. you. So, first of all, okay. So when I realized that I was gay, right? Okay, I realized. I mean, it was always there since like school. Okay. So, but what happened is I did not know what it is called, right? So I knew I was different, but I did not know कि okay, इसको बोलते क्या? Like how was I different? So, and I also tried to fit in for a really long time. कि okay, yaar, like for example, uh, yeah, in high school, so there are like a lot of judgment and like people are trying to fit in. So उस time पे I was getting this thing कि okay, I'm definitely not like other guys that are there in my class. But for the longest time, I did not know what it is called. As I found out through internet, जैसे मुझे पता लगा internet के जरिए कि okay, this is what it is called. It is called gay. So उसके बाद then first of all, it was very weird experience in the beginning because I got to know about okay, it is called gay, but then I also had this notion कि, okay, these people or these people who belong to these communities, they are not considered, they're not respected basically in the society. So उस time पे I was also Right, scared of, right. if I am this, that means like I need to change or I need to do something about it. But with time, I realized that it is, all right. Like as I said in the video as well, in my coming out video, it's every queer person goes through this journey of self-awareness and self-acceptance before coming out to somebody else or their friends. So it's yeah, and that is, I guess, the most crucial part. सबसे important यही होता है कि आप खुद को पहले accept करो, खुद को पहचानो कि okay, what are you? And उसके बाद फिर friends and all, उसके बाद those things are secondary. तो उसके लिए फिर I also joined an NGO and I volunteered there. It was an NGO which worked for LGBTQI plus community. तो वहां that's से great. जो करके मेरे को काफी सारा उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिला कि ओके, दिस इज हाउ people live, and this is also normal, and there are a lot of people who are not who don't belong to the community but who are also still accepting, and that gave me the courage, and then I started coming out from my high school best friend to then my parents, and now I came out on my YouTube channel. All Perfect. right, so guys, मैं Perfect आपको एक journey, चीज इसमें Utkarsh. ऐड करना चाहूंगा. Utkarsh is my college friend, and the way he carries himself, मतलब it's like respect to him. उसने कभी इस चीज को differentiate नहीं करा, उसने इस चीज को accept करा है, and he wants everyone to accept it. So we are really obliged to have people like you in our society. Seriously, it means a lot, buddy. And YouTube channel का अगर promotion करना है, so it's gonna cost you some money. So scared में बात करेंगे. All right, so Tushar, you can carry on with your next question. एंड और उत्कर्ष मेरे पीछे बैठता है, और जब हमारा एग्जाम होता है ना, तो कई बार मैं उसको कुछ दिखाता तो कभी वो मुझे कुछ दिखाता, तो ये हमारा चलता रहता है. सो थैंक्स फॉर दैट. सो रुशाली, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू यार. बेसिकली यार थिंग इज दैट कि बीइंग होमोसेक्सुअल इज अ थिंग, ठीक है, इसमें कोई गलत चीज नहीं है हमारी सोसाइटी के अंदर, बट देयर आर पीपल, होमोफोबिक पीपल. तो उनको फेस कैसे किया जाता है? हाउ टू फेस देम, हाउ टू टेल देम, और हाउ टू रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ कि अब यार प्रेजेंटिंग in front of homophobic people. So what's about that? चलिए बीच में एक बारी रिपीट करना क्वेश्चन, एंड का पार्ट क्या था? Sure. How to deal with the homophobic people present in the society? Homophobic people. How a queer person deals with homophobic crowd, ये throughout their life, throughout their self-exploration changes. At least for me, it changed. I mean, initially when I wasn't out, so if I would see people bullying kids and using homophobic slurs, so
I would try and make sure कि मैं उस साइड हूँ इस क्राउड के जहाँ पे ये बोला नहीं जा रहा है जो ये बोल रहे हैं, ताकि मुझे टारगेट ना किया जाए, बिकॉज आप अंदर से इतना डरते हो, इफ यू आर अ क्वेयर पर्सन आज के टाइम में आप इतना डरते हो कि यार किसी को पता ना लग जाए while growing up, because I remember praying कि I would turn out to be straight. Okay. आफ्टर अ व्हाइल जब ये सेल्फ एक्सेप्टेंस की उत्कर्ष ने बात की थी, सेल्फ एक्सेप्टेंस अगर हो जाती है तो आप एक पॉइंट आता है दैट यू फाइट बैक टू दीज पीपल जो आपको ट्रांसफोबिक, होमोफोबिक स्लर्स बोल रहे हैं या कुछ भी ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं। एंड देयर कम्स अ टाइम व्हेन यू रियलाइज दैट सम पीपल जिनसे बात करना इज लाइक भैंस के आगे बीन बजाना, तो तुम नहीं करते हो। यू कैनॉट एवरी पर्सन, क्योंकि हमारी सोसाइटी वी एज अ नेशन आर वेरी होमोफोबिक, वेरी ट्रांसफोबिक। तो बिफोर एक्सेप्टेंस एक एक्नॉलेजमेंट आता है जिसकी कन्वर्सेशन से अब ये एक हो रहा है लाइव सेशन, तो दिस इज एक्नॉलेजमेंट जहाँ पे वो कन्वर्सेशन स्टार्ट हो रही है। जब तक ऐसे स्टार्टर्स नहीं होंगे तब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। ग्रोइंग अप नन ऑफ अस आई थिंक वुड हैव हैड सेक्सुअल एजुकेशन किसी भी टॉपिक पे। मतलब मुझे याद है हमें तो स्कूल में बुला लिया था अलग, और वी वर जस्ट टोल्ड कि आई थिंक अ लिटिल बिट अबाउट पीरियड्स एंड अबाउट हाउ यू नो स्कर्ट शुड बी लॉन्ग और बाल बंधे होने चाहिए। मतलब वो थी सेक्स एजुकेशन स्कूल में। हमें डिफरेंट सेक्सुअलिटीज के बारे में नहीं बताया था। वी वर नेवर टोल्ड कि अलग अलग ऑप्शंस हैं, मतलब तुम्हें जरूरी नहीं है बाइनरीज में जीना। तो हमें पता ही नहीं था डील कैसे करना है। जब किसी ने प्रॉब्लम ही नहीं बताई तो उसका सोल्यूशन के बारे में बात ही नहीं हुई। So every time I would say कि अगर you are out and you're dealing with somebody who's homophobic, तो वहीं तक जवाब दो जहाँ तक तुम्हारी mental health खराब है, because there's nothing more important than your mental peace. And Exactly. somebody who's hell bent on proving कि नहीं भाई तुम गलत हो, तो वो तो करते रहेंगे, उनका कुछ नहीं जा रहा है। An anonymous user sitting online, he's losing nothing over typing some homophobic slurs to you. So take care of yourself first, put yourself first, अपनी mental health का ध्यान रखो, and that is I think most important point while dealing with anybody anywhere, मेरे हिसाब से। मतलब सो मेरे को आपका एक पॉइंट बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा जो आपने बोला कि सेक्स एजुकेशन ढंग से देने रही है स्कूल्स के अंदर, तो ये और ज्यादा जेंडर्स की नॉलेज हमें कहाँ से देंगे। बिल्कुल सही पॉइंट था। सो आई थिंक जैसे कि हमने अपने प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर डिस्कस करा था कि सेक्स एजुकेशन भी हमें छोटी क्लासेस के साथ देना स्टार्ट कर देना चाहिए। उसके अंदर ये भी इंक्लूड होना चाहिए कि और भी जेंडर्स होते हैं, होमोसेक्सुअलिटी के बारे में बताना चाहिए, एलजीबीटी के बारे में बताना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा हम लोग अपने स्टूडेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाएंगे उतना ज्यादा वो लोग इस चीज के बारे में ओपन अप होंगे। एंड रुशाली, एक और क्वेश्चन मैं एड ऑन इसमें आपसे पूछना चाहूंगा, क्या सेक्शन 377 के बाद सोसाइटी के अंदर कुछ चेंज आया है? मैं ना इससे पहले एक चीज कहूँ, लाइक जैसे आपने अभी कहा ना कि सेक्सुअल एजुकेशन होनी चाहिए, तो देखो मेरा एक ये पॉइंट है कि यूजुअली जैसे गर्वित ने भी यहाँ पे कहा था कि यू डोंट हैव टू नो अबाउट द कम्युनिटी जस्ट बिकॉज यू आर फ्रॉम द कम्युनिटी, एंड आई टेल यू व्हाई। अब अगर हम एसेक्सुअल स्पेक्ट्रम की बात करें यहाँ पे, बिकॉज द होल फुल फॉर्म इज LGBTQIA+, ठीक है? Okay. अगर हम एसेक्सुअल स्पेक्ट्रम की बात करें, एसेक्सुअलिटी में एक आइडेंटिटी होती है डेमीसेक्सुअलिटी, which means that demisexual people are those who can only have physical relationships with other people जब वो एक emotional connection बना लेते हैं। इसमें homosexuality से related कुछ नहीं था, and this can happen even with I think cisgender heterosexual people, है ना? अब the problem is if you, मैंने देखा है मैंने काफी बार देखी है, like if I try and explain this to cis hetero person, मैं that इसके means ऊपर एक चीज कहना चाहूंगा। मैंने होमोसेक्सुअलिटी की आधी डेफिनेशन, यू कैन कंटिन्यू, आई विल से। हाँ आप बोल लो या मैं बोलूं? ओके, मैं कंटिन्यू करूं? या यू कैन कंटिन्यू, बट आई वुड लाइक टू से समथिंग। ठीक है, मैंने होमोसेक्सुअलिटी की डेफिनेशन पढ़ी थी, इसके अंदर आपने बोला कि एक होते क्या बोला था आपने, डेमिसेक्सुअलिटी। व्हाट वाज द नेम? कैन यू ओके, तो इसके अंदर होमोसेक्सुअलिटी की डेफिनेशन, ओके, एक डेफिनेशन दे रखी है जिसके अंदर इन्होंने यही बोला कि ये होता ही क्या कहते हैं, इमोशनल या रोमांटिक टच की वजह से है। ओके, होमोसेक्सुअलिटी इज अ रोमांटिक अट्रैक्शन, सेक्सुअल अट्रैक्शन और सेक्सुअल बिहेवियर बिटवीन मेंबर्स ऑफ द सेम सेक्स और जेंडर। As a sexual orientation, homosexuality is an enduring pattern of emotional, romantic, and sexual attraction.
तो इन्होंने होमोसेक्सुअलिटी की डेफिनेशन को यही बोला कि ये होता ही आपके या तो इमोशनल बिलीव्स या इन सारे टच के ऊपर ही होता है. Hello? So, can you hear me? Hello? Yes, Roshali, you are audible. Yes, Roshali, you are audible. Please go ahead. विकास भैया थोड़ा सा रिपीट कर दो यार, आप किसकी डेफिनेशन पढ़ रहे थे? होमोसेक्सुअलिटी की, जैसे आपने एक स्पेसिफिक टर्म बताया ना हमें, व्हाट वाज द नेम, डेमी. हाँ, ओके, आपने बोला कि उसके अंदर होता है कि हम लोग या तो रोमांटिक या क्या कहते हैं, आइदर आई एम फॉरगेटिंग द वर्ड्स राइट नाउ, वेट फॉर अ सेकंड. ओके, सो रोमांटिक और सेक्सुअल अट्रैक्शंस के ऊपर होता है, इमोशनल रोमांटिक. लेकिन अगर आप विकिपीडिया खोलोगे उसके ऊपर होमोसेक्सुअलिटी की डेफिनेशन ही ये बोल रखी है कि होमोसेक्सुअलिटी होता ही इमोशनल, रोमांटिक और सेक्सुअल अट्रैक्शंस के ऊपर है. I'm asking you that. हाँ, but I still can't understand. I can't understand your question. You said, Yeah, आपने Utkarsh, term बोला था. Yeah. What was the term demi? Okay, Utkarsh, so I what she hope you said is understand it. demisexual, and demisexual are the people who are physically attracted after having an emotional connection already. Okay. Okay. So homosexuality में इससे अलग क्या है demisexuality से? Homosexuality is people who are attracted towards the people of same gender, either Okay. emotionally, physically, or romantically. Okay. नेसेसरी Okay. नहीं है इमोशनल कनेक्शन होना. अगर इमोशनल कनेक्शन जरूरी है आपके लिए टू गेट फिजिकल विद समबडी, दैट मींस यू आर डेमिसेक्सुअल. Yeah. This necessarily doesn't have to be for a homosexual person. Straight Okay. people can also be demisexual. अब Okay. अगर आप सेक्स एजुकेशन देंगे नहीं अबाउट क्वेयर कम्युनिटी जिसके अंदर ये आता है एसेक्सुअल स्पेक्ट्रम में, तो कभी किसी स्ट्रेट बंदे को पता ही नहीं लगेगा यार कि वो डेमिसेक्सुअल है. आई मीन I have met very few people who know what demisexuality is. This is why it is important ताकि हमें पता हो अपने बारे में. I mean, it's never too late to know most of about yourself. उस वजह से I was saying it's necessary to give sex education. आप में से एक और सवाल पूछ Okay, रहे थे about perfect. society. So क्या था? Okay, so I was asking you कि section 377 के बाद कुछ change आया है society के अंदर लोगों के behavior में, ऑर्थोडॉक्स लोगों के नेचर के अंदर जो ऑर्थोडॉक्सी में बिलीव रखते हैं उनके अंदर कुछ. Ali, can you hear us? Maybe there is a connection problem, so I would like to pass on the same question to Garvit. Garvit. Yeah. So basically, I have had done a research on this topic of gender identities and the queerness. So when I was doing this research and I understood the level of the independence and the degree of changes that we have observed after Section 377 was carried out. So before this thing, like even I had a conversation with my mom, who's also a supporter of this of the LGBTQIA+ rights, and she told me like in that times back in 1996 era, she once saw two girls who used to board the same the DTC buses every morning to go to the office, and they were lesbian, and so they used to hold hands and secretly be intimate with each other. And likewise my mom would see, and then she would notice, okay, they are lesbians. She never felt that degree of that, okay, this is something disgusting, because she was always open to the idea. But however, she always felt that the degree of education, the sensitization that was done इस topic के बारे में वो बहुत कम था. अब अगर मैं अभी के टाइम से कंपेयर कर रहा हूँ इसको, आपको ज्यादा ओपननेस फील होगी, आपको ज्यादा you would feel more independent about talking about these topics. अगर आप पुराने टाइम से as I compare the 1996 time to 2020, you would find कि आपको अभी ज्यादा रिलैक्सेशन महसूस होगी, ज्यादा अच्छा ज्यादा इंडिपेंडेंस फील होगी to talk about these things. Even today, I feel comfortable going out and wearing whatever I want to talk to my friends about my feelings and about myself. मुझे ज्यादा independent feel होगा, as I said before.
But had it been before, this time, you would feel that you're doing something wrong because it is not something that's legal. Like even during this time of 2020, I was living in the Middle East for some time, and I realized this thing where, it's not legal at all, and it's bounded by death penalty. And you would realize that there people are restrained to the binaries of the gender. एंड इवन इफ यू हैव अ स्लाइटेस्ट ट्वीक, मतलब अगर आप इन बाइनरीज के थोड़ा सा भी अलग है ना, आप बहुत ही गलत नजरों से देखे जाएंगे. लाइक फॉर एग्जांपल फॉर मी, आई यूज्ड टू हैव रेड हेयर. नाउ अगर आपको किसी को देखकर नहीं पता लगेगा कम्युनिटी से है या कम्युनिटी से नहीं, आप किसी को देखकर नहीं बता सकते हो unless you really talk to the person, right? So I used to have colored hair, and it used to happen that I would be stopped by police to get my passport checked. They would check my bag. They would question me a lot, and this never happened with any of my friends, right? Who were also there with me. So differences आपको यहीं से पता चल जाएंगे. In 21st century, a country where these things are absolutely a criminal offense, as compared to a country like India where this thing is decriminalized, right? So you can literally feel the difference. यहाँ पर अगर मैं कलर्ड हेयर के साथ बाहर कभी गया तो मुझे ना पुलिस ने रोका, ना किसी ने मुझसे ज्यादा कुछ पूछा. And I believe had it been, before Section 377 was scraped off, this thing would have been difficult. And largely, अगर आप इस चीज को न्यूज चैनल पे भी ब्रॉडकास्ट करते हैं, saying that this section has been scraped off, a rule that was there from the British era has been scraped off. It is coming into the notice of the people as well. Right, जो लोग रेगुलरली न्यूज चैनल्स को देखते हैं, somewhere they're also getting the education. It is getting in the subconsciousness that this thing exists. ऐसा कुछ भी होता है. Alright, Garvit, so you have got a very beautiful comment. You have a beautiful voice, Mr. Garvit. Mehak Bhatia. Okay. Alright, so Mehak, there is a question यार, हमारे पास में बहुत सारे क्वेश्चन दे रहे थे. Okay. Hello. Tushar, let me ask him one question. Mehak Hello, हाँ, विकास. Yeah, sure. Okay, Mehak का एक क्वेश्चन आएगा. How you finally felt after coming out to everyone? मतलब जब सबको पता चल गया तब कैसा था उस समय फीलिंग आपका? Okay, you're asking me, right? मैं एक बात बताऊँ, I was asking the same question. Okay. All right. So basically, so I'll tell you that in brief, what happened was, my friend asked me, like जब स्कूल का डिस्पर्सल हो रहा होता है, उसने मुझसे उस टाइम पे कभी बाहर जाते हुए पूछा था कि do you feel different from, the normal people? She didn't mean that वो education में नहीं था, तो people would use the word normal only. So do you feel different from rest of the people? And I said, I can't answer your question. तो हम कभी और बात करेंगे. Next day she asked me the same question. Then I told her, okay, fine, but किसी को बताना मत इसके बारे में. And she was a very good friend of mine. Next day हमारा एक एग्जाम था, and she felt कि अगर मैंने कभी कुछ कर लिया, because people from the community को डिप्रेशन होता है, मतलब you can feel कि कोई बात सप्रेस करके रखा है, तुमको डिप्रेशन से एक्सपोज होते हैं, there is anxiety and there is everything. So she thought that I might get into depression someday, and what if I commit suicide? तो फिर उसके ऊपर ब्लेम आ जाएगा कि कि सिर्फ ये बात मुझे पता थी तो कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए. So she told another friend, and she told that with trust. तो उस friend ने she told my entire class. When my entire class came to know about it, the whole school came to know about it. And then I was exposed to more issues like sexual assault. So I had been sexually assaulted 7 times. Out of which it was 2 to 3 times in school itself. Once I remember going to the class and somebody, I was very late, so I was in a hurry, and I didn't have the consciousness. So somebody came from behind and touched me in wrong place. And I could not, see who was there, although I know, but I couldn't react. I just rushed into my class because I was getting late. So after coming out, everybody's reaction was like, some were very comforting, some were like this doesn't make any difference to how we're going to react towards you. कुछ को लगा कि नहीं, कल चीज काफी गलत है, कुछ काफी डिस्टेंस मेंटेन करके रखते थे. जो जूनियर्स थे काफी छोटी लेवल के, they used to be like, they used to imitate, they used to act.
I remember one of my teachers also, like, we used to have this farewell thing, like everybody has farewell in schools, right? So we used to have a pageant in our farewell. So one of the teachers, like I was one of the selected contestants, so one of the teachers said, Beta, why are you walking like a girl? You know, you should walk with your arms open and everything, so like a man walks. So it wasn't just from students, and it was there from the teachers, from the juniors, from everybody. And so yeah, it was horrible to some extent, but I never made it, come over me. I was a child who was Okay, focused towards something, and I always Garvit, I kept would my like to interrupt you here. I would like to ask यार, आपने एक लाइन बोली अभी, आपने एक लाइन बोली कि सेक्सुअल असॉल्ट जो आपके साथ हुआ. yeah, सो माय yeah, क्वेश्चन इज फॉर ऑल थ्री ऑफ यू. यार लोगों को क्या होता है यार, जो एक होता है कि हाउ पीपल आस्क यू कि हाउ डिड यू कोप अप विद द एंजाइटी एंड द डिप्रेशन दैट आफ्टरवर्ड्स यू वेंट थ्रू इट. ठीक है, उसके बाद, बट उसके बाद की चीज क्यों ऐसा होता ही क्यों है. तो एक मैसेज, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जो आप हमारी ऑडियंस को देना चाहते हो यार, आपकी जैसी पर्सनालिटीज हो सकता है मे बी इस वर्ल्ड में बहुत सारी हो. ठीक है, इस कम्युनिटी को बहुत सारे लोग बिलोंग करते हो, बट हम नहीं चाहते कि उन लोगों के साथ भी वो सेम चीज रिपीट हो जो आपके साथ हुई है. तो आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हो, आप तीनों, क्योंकि आप यू आर रिप्रेजेंटिंग दैट कम्युनिटी इन द लाइव सेशन. तो व्हाट मैसेज डू यू वांट टू गिव दैट दोज पीपल जो ऐसी चीजें करते हैं, जो सेक्सुअल असॉल्ट करते हैं. दिस इज नॉट द राइट थिंग. yeah. So like the first time it happened with me, I was very uncomfortable about it, but I did not know what is it कि मतलब मेरे को कभी good touch bad touch इसे सिखाया नहीं था ना स्कूल में ना घर पे. तो my mother is a single parent, so she was working, तो उतना टाइम नहीं होता था हमारे पास. So good touch bad touch, but idea मिल जाता है. First time it used to feel very bad. Second time you would feel कि why is it happening again and again. Is it I used to cry कि I'm different, that's why this is happening, or like that. फिर एक बार ही हुआ था when a security guard did it, and I was literally in tears. I was in tears and I immediately complained. But after some time, when it happened again and again and again, you feel the fear, but then you feel the numbness. कि you don't feel anything. ये तो होता ही रहता है, you feel the numbness. So I made sure that कभी भी ये होता है, I first of all reach out to my friends. I tell them everything, that whatever is happening. I reach out to my senior, whoever is the nearest. I tell them everything, and I don't take any step, just इसे जल्दबाजी में. I always ask कि मुझे क्या करना चाहिए, what would be the right thing to do. So I always seek for help that ways, to take a very practical and a logical decision, because it's very important to stay calm during this time and always talk about it. Reach out to your friends, and then come out to a decision, I would say. And you won't believe that even in this time of 21st century, just yesterday my friend has also faced this assault, wherein he was just wearing something short. And there were guys in that area who were like, अच्छा मियाँ दिख रहा है, like phone निकाल video बनाते हैं. They legit use this line. Can you believe it? Even in 21st century, where India has the highest population of youth and a lot of education, this thing is happening. So please talk about it, and discuss about it. But use the right channels. Like अगर आप straight away social media पे लिखने लग जाओगे कि this person did this to me, that won't be the right thing to do. क्योंकि अगर रेप होता है किसी भी कंट्री में, किसी भी सिटी में, पुलिस भी चेहरा ढकती है, पुलिस भी आइडेंटिटी हाइड करती है for the victim as well as the accused. So the right thing is to talk about to your friends and reach the administration for it. Totally agreed. Alright, so Tushar, you can carry on with your next question. So basically, Utkarsh, the question is for you, man. The thing is that कि यार जब आपने अपने आप को एक्सप्रेस करा सबके सामने, तो वो फीलिंग होती है, हम कोई चीज जब एक्सेप्ट कर लेते हैं ना सोसाइटी के सामने और अपने अंदर, दैट फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस व्हिच यू सेड, कि वो हाउ वाज दैट फीलिंग व्हेन यू एक्सेप्टेड दैट थिंग इन फ्रंट ऑफ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड व्हाट वर देयर रिएक्शंस एंड व्हाट वाज योर फीलिंग इन विद इन यू, कि वो कैसी फीलिंग थी. ऑफ कोर्स दैट वुड बी अ प्राउड फीलिंग विद इन यू. You would be feeling proud and happy about yourself that you were expressive. So okay, so of course I felt incredible after coming out to my friends and parents. It is like this weight, you've been carrying throughout your life, the secret that you cannot tell anyone, and and this is always there, somewhere in the back of your mind. Okay,
अभी मैं जो कर रहा हूँ इससे कहीं ऐसा तो लोगों को आइडिया नहीं लगेगा कि ओके आई एम गे और लाइक आई एम डिफरेंट. You're getting like in everything, like from like Garvin said about walking. It is a very basic thing. Like you walk all the time, but just imagine constantly having to think, okay, how am I walking? मेरे को कैसे देख रहे होंगे पीछे से लोग? So people don't usually think उसके बारे में, but queer people have to go through that thing with वही दिमाग में पूरा time. So of course it is exhausting. It takes a lot of energy, and once you are like out and proud, so that weight, and it's like a new feeling. You are used to that weight, right? It's like carrying a heavy school bag or backpack pura time, and then Exactly. taking it out finally. Right. So it's like that, and it's very relieving. And yeah. Okay, so I And would also like to one add thing I upon would like this. to add, to your previous question that you asked, that what can we do to avoid such incidents like sexual assault or bullying or Exactly. things like that. So Exactly. I would like to tell a story about my school, an experience basically. So what happened is, even in my school, I was bullied, and I was made fun of, and people used to imitate sometimes. Okay, he's like different than us. Sometimes it was the walk, sometimes it was like other things. Like I was not good in sports. I was good in sports, but I was not good in cricket. So that was also like I don't know. Things are weird, right, in high school. But I was fortunate in a way because I had really supportive teachers. So I believe it is more of a responsibility teachers and bade logon ki than kids, because kids do not know things उस time पे. Like abhi I have my high school friends who used to bully me. They come up to me and they're like, okay, we did not know, and agar हमने कभी hurt किया हो तो we apologize. But उस time पे they don't know any better. So I will give you an example. So we had this play called The Proposal in 10th. Okay, and we were हमें role play करना था उसके ऊपर. So I decided there was no girl. Okay, so I decided, okay, I will be there. It's like a love story, right? So I decided I will be like the guy, and I decided or there was this another guy in our group. I was like, okay, you can play the girls part. Okay, so we were doing, and we were getting made fun of. Pura in entire, everybody was like, okay, they are turning it into gay story and things like that. But जिस दिन हमारा वो presentation था, जिस दिन हमें वो perform करना था टीचर्स के सामने और पूरे स्कूल के सामने, so I remember my English teacher saying just one thing after we were done with the whole play. She just said, Utkarsh, don't you think कि Natasha को skirt पहनना चाहिए था shorts की जगह? It was a guy. That was like the only thing, and she then laughed. So she did. So this is how things change. And then students जो पहले सोचते थे कि okay, in ये लोग people are making a gay story and they are making a fool of themselves and things like that. वो सारी voices उस time पे mute हो गई. So same goes with this thing like bullying and assault. If you have supportive teachers, if you have supportive environment and sex education, तो अपने आप वो तरह की voices हैं या जो लोग हैं वो उनका they will just be muted. Okay. All right, so that was a very good answer and a very good experience too. All right, so my next question is from Roshali. How far do you think life has changed for you after coming out to your family and friends, and I think I should say to the society? Life में कितना change आया है पहले से और अब से? Change कितना change आया है? Okay, so रोशाली के reactions आधे आंसर देते थे. Facial expressions. रोशाली के facial expressions are the best. पूरे सेशन में facial reactions पे गेम खेल रही है रोशाली. अरे यार और हंसी आ रही थी जैसे कि मतलब पहली बार है ना इतनी इम्पोर्टेंस दे रहे हो ऊपर से यार सारे. तो देखो रोशाली has a very pleasant smile, I would say. अच्छा, thank you यार. So what I'm saying is कि I grew up in a very homophobic place. So as I said, I grew up praying कि I would turn out to be straight. But few years back, I met a lot of queer people, and
I remember the first time I saw somebody who had the same gender expression as I have, and I was shocked. I was like, oh, अच्छा, so ठीक है. यही है वो. मतलब एक वो feeling होती है ना while growing up, you have this one feeling. I'm not gender normal. मतलब यार सबके बड़े बाल हैं आसपास, यार मेरे छोटे बाल हैं, मतलब and I got picked on that हमेशा. मतलब हमेशा बोला जाता था बहुत ही प्लेफुल उसमें कि तुम तो लड़का हो और ये और वो. मतलब instead of understanding, instead of letting somebody have their own choice, their own opinion, हर किसी को अपना राय देना होता था. तो I remember the first time I saw somebody who identified as a woman. I don't identify as a woman anymore, but they had short hair and they were wearing some sort of jeans and a t-shirt. And I remember feeling really intimidated. And I remember asking them, "Are you a part of the queer community?" और फिर उन्होंने मेरे को ऐसे बोला कि yeah, obviously. And you know, एक दो दिन मेरे को लगा ये understand करने में कि I am not alone. Last 2 years mein I've met a lot of queer folks. I have become friends with a lot of queer people, and they have helped me realize that coming out is not some party या bomb की मतलब जरूरी है करना और बैंक से आना जरूरी है बाहर. मतलब gender and sexuality both are fluid, जो कि हम इस बारे में बात नहीं करते हैं. अगर जैसे आज कोई एज ए बाइसेक्सुअल कम आउट करता है एंड कल वो एज कोई और आइडेंटिटी कम आउट करते हैं, तो पीपल आर लाइक यार तूने तो कहा था तू वो है, अब वैसे कैसे. तो मतलब आई डोंट थिंक पीपल अंडरस्टैंड दैट. बट जब तक आप एक्सप्लोर कर रहे हो अपने आप को, तब तक यू कैन लर्न न्यू थिंग्स अबाउट योरसेल्फ, रियलाइज अ लॉट ऑफ स्टफ अपने बारे में जो आपको बचपन से नहीं पता है, कभी सिखाया नहीं गया है. तो चेंज बेसिकली ये है कि बहुत ज्यादा एक्सेप्टिंग नेचर हो जाता है मेरे हिसाब से. मतलब मैंने बहुत ग्रोइंग अप आई वाज नॉट माई सेल्फ. क्वेयर पीपल डोंट ग्रो अप एज देमसेल्फ. मतलब हमें इतना ज्यादा सोसाइटी में अपने आप को एडजस्ट करना होता है कि हम भूल जाते हैं कि हमारी पर्सनैलिटी क्या है, हमारी पसंद क्या है, नापसंद क्या है. तो वो सब अनलर्न करा. इट्स लाइक गेटिंग टू नो योर सेल्फ पहली बार. मतलब ऐसे एकदम आप अपने आप से फेस टू फेस मिल रहे हो आफ्टर कमिंग आउट, वो एक डर खत्म हो जाता है और जो आप चीजें औरों के मन से कर रहे होते हो वो कम हो जाती है. मतलब आई रिमेम्बर फ्यू इयर्स बैक आई यूज्ड टू स्टिल वेयर सूट वगैरह वगैरह, मतलब सूट सलवार ये सब, एंड आई वाज नॉट कंफर्टेबल वेयरिंग देम. इट वुड ट्रिगर माय डिस्पोरिया. एंड अब it's been a year, I wear what I want to wear after coming out. And मतलब ऐसा नहीं है कि प्रेशर नहीं है या फिर लोग बोलते नहीं है, बट वंस यू कम आउट आप एक थोड़ा सा ना एक स्टैंडिंग हो जाती है, थोड़ी सी पार आ जाती है. एंड बाय सेइंग दिस मेरा एकदम ये मतलब हैव टू कम आउट ऐसा कुछ नहीं है. आई थिंक पीपल शुड टेक देयर ओन टाइम. ऑफ कोर्स वी नीड मोर पीपल in the society who are out from the, like they're not closeted, because honestly I think queer community is a minority क्योंकि सब कोई out नहीं है. So like it's just कि अगर somebody is closeted तो there is no pressure to come out जल्दी. आप अपना time लो, take your time. Everybody should take their time, accept yourself and just know कि it's a journey, it's not a destination. Okay, Vishali, So guys, अच्छा है क्वेश्चन आया है. Okay, Vishali, I have to add upon this. इसमें एकता का एक क्वेश्चन आया है. What do you think is more difficult, to handle the reality before or after acceptance? पहले ज्यादा टफ होता है या जब सबको बता दो तब ज्यादा टफ रहता है? I think there's some issue with network connection of Vishali. So before proceeding, I would like to say that this session is going really well. This session is going really well, and guys like you are such expressive people and such confident people कि session बहुत अच्छा जा रहा है. And of course हमारे जैसे anchors तुषार मल्होत्रा and विकास महाटा, तो of course session तो अच्छा जाएगा ही. So cheers to all of us. And okay विकास, continue please. Alright, so गर्वित, मेरा आपसे क्वेश्चन था कि इस सिचुएशन को हैंडल करना पहले मुश्किल है या जब सबको बता दे तब ज्यादा मुश्किल है? So like before you know about it, like काफी चीजें आपको अपने अंदर ही suppress करनी पड़ती है, you know. So if you want to
wear something, you have to come up with an excuse why are you wearing it. Because if people don't know about you, तो फिर आपको एक explanation देनी पड़ेगी. अच्छा, आपने अगर nail paint लगाया है और किसी को नहीं पता है, तो आपको पहले एक explanation ready करना पड़ेगा. आपने nail paint क्यों लगाया है, right? So I believe so. First of all, it is a very subjective thing actually. कि, some people like to be discreet. There's a person like Roshali said, take your time to come out. So there are some people who don't like to tell about it, who prefer to be discreet, and then also for them. गाइस, अगर आपके पीछे कुछ भी टेलीविजन या कुछ भी म्यूजिक वगैरह चल रहा है तो उसे एक बार ऑफ कर दो. Am I audible to all of you? Yes, Please Vikas, say you yes. are audible. Yeah. Okay. Yeah. So I think there's some issue with Garvit's connection. All right, Utkarsh, you can answer this question now. Okay, so as Garvit was saying, it is very subjective. It's different for different people. Some people like to be discreet, so for them, of course, it's easier to stay in the closet. But I believe for most of the people, it would be easier to after coming out. If you are in a position to come out, if you have a support system. Because then you don't need to explain each and every time. Okay. Like you can, yeah. अच्छा उत्कर्ष, there is a question यार, there is a question कि what's your favorite part in LGBT community? मतलब what's your favorite thing इस community के अंदर? What is the favorite thing? Favorite thing, okay, as in मतलब फीलिंग्स के साथ या फिर क्योंकि सारे लोग हैं यहाँ पे, ठीक है, एंड यू What हैव do you guys like डिस्कशंस about yourself the most? डिस्कशंस होती है, फन होता है, तो व्हाट्स द फेवरेट थिंग? favorite thing, okay. I think the sense of belonging, because Okay. there are people who share similar experiences as you do, because queer people almost most of them share similar experiences, going through that self-acceptance wala phase, and then getting bullied or possibly bullied in high school, and then getting over that, and then self-acceptance, and then coming out gradually to friends and family. So it's like a very similar experience that every queer person go through. Yeah, there's a sense of belonging, and you know what other person has been through and what are they feeling right now. That is, I guess. And of course this is Okay, Vishal, let me मैं अपनी फेवरेट, पहले मेरे को अपनी फेवरेट चीज तो बताने दो कि जब भी मैं वीडियोस देखता हूँ यूट्यूब पे देखता हूँ, लाइव सेशंस में देखता हूँ, तो यार जिस तरह तुम अपने आप को एक्सप्रेस करते हो वहां पर, जिस तरह तुम फन करते हो, जिस तरह डांस करते हो, जिस तरह एक दूसरे के साथ मिलजुल कर मजे मारते हो ना, वो दैट थिंग ब्रिंग्स अ स्माइल ऑन माय फेस, एंड दैट इज रियली अमेजिंग, एंड सीरियसली दैट्स रियली अमेजिंग. विकास, कंटिन्यू प्लीज. Alright guys, so मेरे एक क्वेश्चन था आप लोगों से. Okay, डोंट यू थिंक हमने LGBT को एक अलग से कम्युनिटी बना दिया, उसने कहीं ना कहीं आप सबको डिफरेंशिएट किया है? डोंट यू थिंक सो? ये चीजें बहुत नॉर्मलाइज होनी चाहिए. There should be no discrimination. You are human beings, we are human beings. You have face, we have face, we all have same organs. There's no such difference. तो एक अलग कम्युनिटी क्यों ही बनाना? क्यों अपने आप को ऑल नाइट आई नो ये दिस चीज कि आप लोगों को लोग डिफरेंशिएट करते हैं, इसलिए आप लोगों ने अपनी मिलके एक आवाज उठाई. बट डोंट यू थिंक सो कि अगर हम लोग इस चीज को रादर देन आवाज उठाना, इसको नॉर्मलाइज करना चाहे तो वो कहीं ना कहीं बेटर रहेगा. अगर हम एक कम्युनिटी बनाएंगे तो ऑब्वियसली लोग उसको कहीं ना कहीं डिफरेंशिएट करेंगे. व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? Who are you asking me? Yeah, anyone can answer upon this. Yeah, totally. I mean, there is a necessity to blur the lines. However, the importance is to still realize कि एक minority होती है और एक majority होती है. Right. Totally. To understand that the rights are very important, and until and unless the equal rights are given, you cannot blur that line. Right. As I said before, from the example of the Middle Eastern culture, that
बाइनरी को तो आप भूल जाओ, बियॉन्ड बाइनरी को भूल जाओ. अगर बाइनरी मैन एंड वुमेन के बीच की बात करें, देयर इज अ लाइन, यू नो, देयर दैट वुमेन आर डिफरेंट फ्रॉम मेन. तो जब तक आप इक्वालिटी नहीं क्रिएट करोगे, आप वो लाइन को ब्लर नहीं कर सकते. So I believe in this case, maybe if you're going beyond the binaries, it's important for equal rights to blur the line in between. ओके, तो और किसी को इसके ऊपर अपने व्यू शेयर करने हैं? उत्कर्ष और रोशाली. आपने ये कहा ना कि हम कैसे सेग्रीगेशन छोड़ के कंबाइंड सोसाइटी बन सकते हैं, आप ये पूछ रहे हो ना? हाँ. What happens is when a queer person tells you, these are very basic things that straight people can keep in mind while talking to somebody who's queer. जैसे आपको कोई कहता है ना, यूजुअली आई एम नॉट सीइंग क्वेयर पीपल एक्चुअली सोच होने की इस चीज से दिक्कत हो रही है, बिकॉज बहुत ही नॉर्मल सी बात होती है, बहुत ही नॉर्मल सा कमेंट कर सकते हो यार मैं तो मजाक में कहा था. प्रॉब्लम इज कि व्हेन यू हैवंट लिव्ड समबडीज लाइफ इन द वे दैट दे हैव लिव्ड इट, आपको नहीं पता आपका मजाक किसी को कैसा लग सकता है. जो आपने जैसे वीडियो दिखाई थी उसमें मीठा वर्ड यूज हुआ था. अभी कैरी मिनाटी की वीडियो आई थी, उसपे भी कितना काफी बात हुई थी उसपे. सो लोगों का ये कहना है कि हमने तो मजाक में कहा था. बात ये है कि आप जो आज मजाक कर रहे हो, मैं उस वर्ड को सुन के बचपन से अभी तक हैरस हुआ हूँ, तो आपका वो मजाक मुझे मजाक लग ही नहीं सकता भाई. It's like that. So when somebody tells you that you're being problematic, instead of taking it on your ego, ask them that how you can be better. थोड़ा सा टाइम दो. अगर आपका फ्रेंड है कोई, उसने आपसे कहा तो, बट व्हाट हैपेंस इज पीपल यूजुअली टेक इट ऑन द ईगो कि यार इसको तो हर चीज से दिक्कत है, इसको तो कुछ भी बोल दो हर चीज से दिक्कत होती है, या इसका तो हमेशा एक्टिविज्म चालू होता है. नहीं, इट्स वेरी सिंपल कि किसी की लाइफ है, वो अपने तरीके से जीना चाहते हैं. आपको कभी सिखाया नहीं गया, हमारी सोसाइटी वैसी नहीं है, तो अब बताया जा रहा है तो आप सीखो, उसे पॉजिटिवली लेने की कोशिश करनी चाहिए. बट आई हैव सीन दैट यूजुअली पीपल टेक इट ऑन देयर ईगो. एक क्वेश्चन भी आया था कि हाउ कैन वी मेक देम फील इक्वल. बहुत ही छोटी सी बात है, व्हेन समबडी कम्स आउट उन्हें कांग्रेचुलेशंस मत बोलो यार, पहली बात, ठीक है? मतलब this has happened with me. I've been congratulated for coming out as a queer person. मतलब I don't understand what is there to congratulate. But like thank you, I understand आप क्या कहना चाहते हो, but I think phrase better किया जा सकता है. आप किसी से कैसे conversation कर रहे हो regarding their sexuality. Instead of asking what you identify as, लोगों के pronouns पूछो, उनकी respect करो. मतलब alright, Roshali, you develop a phrase today. We'll try as much as we can. हम उसको जितना शेयर कर सकते हैं उसको उतना शेयर करेंगे. ओके, सो हम दोनों के साथ, हम सबके साथ यहाँ पे दो गेस्ट आए हैं, उनके कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से. सो गाइस, यू कैन आस्क. हेलो गाइस, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस from a panelist. Am I audible? Yeah, you're Yes, audible. you are audible, bro. Yes. First, please tell us your name. My name is Sayyam, Okay. and actually I don't have a question, any of the question. I just Okay. want to deliver my point through my Yeah, sure you can. poem. Through my poem. Yeah, sure. So it's like questioning the society. It's based on that. So let me start. So it goes like, why do we hide? Don't we deserve to thrive? Why are you stopping me? Are you afraid of the potential rising me? Here I am to question your humanity, questions which questions your sanity. Why I am approached differently? Why I am not accepted apparently? These questions hurts our emotion. These questions hurts our emotion. Why I am cast aside like the Bible during crime? Why my human rights are so inhuman? Why my look provokes your demon? Does your holy book taught you so? Or these are the things your genes inherited too? If genes are to be blamed, then my parents won't push me to segregate. Maybe they are too old to fight, but they are taught. Maybe they are too cold to see that the fight has been already lost.
Forget them. You tell me. Can I expect this crop to harvest what I need? Do I have to think again to show where I bleed? Are you so dumb to not see what we suffer? Are you so numb to not realize where it differ? Enough of the world to show where I reside. Enough of this world where originality doesn't count in my pride. I have no shame to call myself gay, homosexual, or lesbian. I feel proud to flaunt what I am. I know the problem is not with me. The problem resides in your partial empathy. Thank you. All Hi, right, so sir. that was a lovely poem, Sayam. Okay, so before asking a question from Tanya, okay, so Garvit bro, I think आपको यहाँ पे एक गाना गा के जाना पड़ेगा क्योंकि people are totally falling in love with your voice. मेरे को अभी तक मेरे सामने शायद 5 से 6 कमेंट्स आ चुके हैं. Garvit, I'm in love with your voice. I'm in love with your voice. Okay, so Tanya, now you can ask your question. Yeah, I don't have a question actually. I just want to give my point of view. So it's like I read somewhere that empowerment is really important when we talk about these things, right? So there was a survey, and people want to make a presentation of it. So they went to different countries. Okay. So when they came to India, women said that empowering is really important when we talk about establishing something for us. So I just want to know your point of view on this thing. Can you repeat the last line? Yeah, sure. I just want to know that empowering is really important in establishing your rights, and people. It's really important for people to understand that your emotions really count. So is empowering plays a really important role, or is it just some situation when certain people feel like that, yeah, I guess I should be empowered, but some were like, okay, it's not that key point when we come to establish our identities. Yeah, nice question. So, Okay, so answer this nice question. like I actually had, yeah. Sorry, Rishali, would you like to go first? Nah, Harvit, go ahead, go ahead, go ahead. Hey, anyone can go first, or I think I Hi should guys, ask I'm now. back. I'm back. Hello, my Anchor. Did you miss me? Did you miss me? Yeah, a lot. Oh, thank you so much. Okay, Okay, so Garvit, go ahead, please. Vishal, you can answer this Go question. ahead, Garvit, go ahead. So, this reminds me of one time when I was in school, and people would generally ask you, what do you want to become when you grow up? And I, at that time, wanted to become some artist or a fashion designer, like just vague dreams. So, I was told कि यार तुम जैसे सारे लोग fashion designer क्यों बनना चाहते हैं? You understand that's a very derogatory remark on you. But however, as I grew up and I realized, as Rishali also said, that she met more people like her. Similarly, when I met more people like me, and I saw that the people from the community are not only going to a streamlined profession, they are doctors, they're engineers, they're pilots, they are in hardest jobs that you can imagine, they're everywhere, right? So it's so first of all, that topic that we have ki sensitive होते हैं काफी ज़्यादा, that's not true, and that lesbians are very tomboy, that's also not true. So coming on to this empowering thing, I believe just say we used to have this long term discussion on a reservation system. And so like if we get a reservation, people take undue advantage and everything. However, if we completely scrape off that system, many people who are getting advantage, I personally know many people are getting advantage out of that system, because they really, really require it. They will be deprived of it. So I believe reservations and this thing like uplifting people also exists within the community. I know in several companies, they have the corporate social responsibility imposed on them by the government, and they are very actively working to send people from the communities to school. They provide them with ration. So, for example, there is one organization I know which is providing them with all the domestic supplies required at this time of lockdown, because where the government had ignored, this sector of people being outcast, the organizations are coming forward. So, I believe empowerment. This is social empowerment.
which is very important. Then there comes economic empowerment, which is to provide them jobs, to provide them, income, so that they can grow. Because nobody wants to end up being a beggar, right? Everybody has, done something. So likewise, if any transgender person would come to me, we see them on road, and my friend who also belongs to the community has one thing to say: just say, they just go find a Arvind, job. please be bilingual. That request from you, please try to be bilingual. Yeah. Sorry, yeah. You always go with the flow. No, sorry, yeah. So I mean, अगर आप स्टेबल हो, अगर आप काम कर सकते हो, तो आपको ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस ढूंढनी चाहिए, आपको मदद के लिए जाना चाहिए जहाँ पे आपको काम दिया जा सके. There are actually a lot of organizations you would not imagine, but काफी सारी ऐसी organizations हैं जो काम provide करती हैं to the community members, to the transgender community, and so many more. So you should seek help rather than begging. So I believe, yes, reservation and empowerment is very important in this case. Correct. True. Can I say one thing? Sure. Yeah. So the thing was that in that interview, so Indian lady थी, तो उससे पूछा था कि do you feel that there is a need of something as empowering? So then she said कि in a very layman language, she said इन लोगों की chance तो तब आएगी जब normal इंसान को ही equality और empowerment मिल पाएगा. So then she focused on what really women needs, because I'm not just talking about women. It's a broad spectrum, right? So it's about everyone. It's like it's right and responsibility of each and everybody who, because you want to say something and you should have that right. Everyone has the equal right to say something or getting into it, right? So she said the same thing कि अगर हमारी country या किसी भी जगह पे if there is not empowerment for any individual, so why we until and unless we don't get right individually, एक community या किसी के बारे में मतलब right का possession करना is really difficult because it is really important for us to understand, not only understand but to educate ourselves to know कि हर कोई equal है और जितना हक हमारा किसी चीज पे उतना दूसरे का भी. Tanya, really loved your point. You raised a very good point. जो आपने वो बात बोली ना, उन लेडी ने कहा कि इनका नंबर तो बाद में आएगा, पहले नॉर्मल पब्लिक को तो इक्वालिटी मिल जाए. सो बहुत ही अच्छा पॉइंट बोला आपने. एंड कहीं ना कहीं वी फील लाइक कि क्या नॉर्मल नहीं है हम में और आप में. व्हाट्स द डिफरेंस? बार बार क्वेश्चन दिमाग में ये आता है यार. वी आर ह्यूमन बीइंग्स, वी ऑल आर सेम. कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए. सो दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट. थैंक्स फॉर जॉइनिंग विद अस. एंड गाइस, अगर आप में इसका कुछ आंसर देना चाहते हैं, देन यू कैन. उत्कर्ष, रुशाली. आपने कहा कि एम्पावरमेंट होना चाहिए राइट एस्टैब्लिश करने के लिए. एम्पावरमेंट आने के लिए आपको पहले अपनी प्रेजेंस दिखानी होगी. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप में से कोई कभी भी नाउ पे गया है, उधर जाकर एक्सेप्टेड फील करना पॉसिबल ही नहीं है. मतलब आई रिमेम्बर मैं डैड के साथ गया था बचपन में, एंड बिकॉज मेरे हमेशा से छोटे बाल थे, तो इट वॉज ईजियर. माई मम वॉज वर्किंग ऑल द टाइम, तो पापा के साथ उधर जाके बाल कटवाना. बट आई रिमेम्बर आई वुडंट सी एनीबडी लाइक मी देयर, तो मुझे हमेशा आउट ऑफ द प्लेस फील होता था उधर. ग्रोइंग अप फिर ये हो गया कि उधर मत जाया करो बाल कटवाने और ये वो. मतलब इट्स नॉट इवन लाइक कोई उसकी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी नहीं है. इट्स जस्ट कि कोई क्वेयर पर्सन दिखा ही नहीं, मतलब प्रेजेंस ही नहीं दिखी. तो आई ऑलवेज फेल्ट कि मतलब कुछ गड़बड़ है इधर मेरे साथ. मुझे ये लगता था लिटरली. एंड जब तक मुझे प्रेजेंस नहीं दिखेगी, मुझे एम्पावरमेंट फील नहीं होगा, तब तक मुझे लगेगा ही नहीं कि मुझे राइट्स की जरूरत है. मुझे तो ये लगेगा कि मैं गलत हूँ. दिस इज वाई एम्पावरमेंट के लिए प्रेजेंस जरूरी है. और जब आप अपनी स्टोरीज बताते हो, दैट गिव्स यू पावर, no matter if it is a successful story or if it is something that you've been through and it has traumatized you. आप अपनी स्टोरी बताते हो, कोई भी अपना एक इंसिडेंट शेयर करते हो, it gives you power. And there are so many people out there in the world जिन्होंने same discrimination feel किया है. तो this is why sharing your troubles, sharing your triggers, sharing your stories important, ताकि उन्हें भी लगे वो अकेले नहीं है. अगर आप किसी भी क्वेयर पर्सन से पूछो, मोस्ट ऑफ देम विल टेल यू कि वी विश जितना हमें आज पता है उतना हमें जब हम 13 साल के थे तब पता होता. बिकॉज हमारे पास आसपास कोई वही नहीं था, मतलब कोई सोर्स नहीं था
Lack of रिवर्ट education भी करने कह को सकते या हैं। समझने Hello. या Hello, Roshali. Okay, so I was saying कि इसे lack of education भी कह सकते हैं कि हमें छोटी क्लास में और जो डिप्रेशन और एंजाइटी की बात हो रही थी, सिर्फ ये बोला जाता है कि क्वेयर पीपल हैव मेंटल इश्यूज, मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, बट द रियल रीजन इज कि वी ग्रो अप हमेशा से बचपन से अभी तक अपने आप को दबाकर ट्राइंग टू चेंज आवरसेल्फ। अगर आप में से कोई भी बड़ा होगा ना ट्राइंग टू हाइड योरसेल्फ, तो आप भी एक टाइम पे जाके इट विल एक्चुअली मेस विद योर हेड। मतलब वॉकिंग इन द स्ट्रीट, जैसे बात हो रही थी बैग को हमेशा टांगे रहने की, आई स्टिल हैव दैट हैबिट। आई एम अनकंफर्टेबल विदाउट माय बैग गोइंग कहीं पर भी। इट जस्ट मेक्स मी फील प्रोटेक्टेड कहीं ना कहीं से। मतलब आई एम नॉट वेरी श्योर इफ यू कैन अंडरस्टैंड इट, बट दैट इज हाउ इट इज। तो Okay, so we have a we guest. have mental health. Okay, Tushar. Uh, Go and ask the question. yeah, so we have a guest here. So hello, sir. Sir, please can you introduce yourself? Yeah, good evening to one and all. A Yeah, hello, nice sir. topic you have chosen. Thank you so much. Myself is Bharati. I'm from Tamil Okay. Nadu. I'm from Tamil Nadu, southern part of India. So a very nice topic, which actually should be a debatable. So I'm not very knowledgeable or something like this platform. This is the first time I'm actually speaking. Out of my curiosity, and I want to register my thoughts also. I think this is one of the best platform. So I just feel like transgender, they are a human like us. They are the people who are living Exactly. along with us like our brothers and sisters, right? So it is very important equality. That means they also should enjoy the privilege of equality what we have. That is primary. That is what I want to register in this forum. You should support them like our brothers, sisters, friends, us, like anyone, because they are studying along with us, they are working along with us, they have the same love and affection what we have, everything. So I just want to register myself like we should treat them like our friends, relatives, brothers and sisters. They are our friends who are living in the same society where we are living. So it is obvious like we should maintain people like men are same equality. We should maintain with them also. This is what I want to register. I'm not about. Sir, I think there's some issue with your internet connection. Or just to out of this. Thanks for giving me an opportunity. Thank you so much, मेरे sir. को Thank you इनको so much. थैंक्स बोलना है। Yeah. Sir, आपको thanks. You extended support to trans community, and I'll be very frank while saying that even queer people, we also grow up exactly like how straight people grow up. So transphobia queer लोगों में उतना ही होता है जितना straight लोगों में होता है, और this is a true fact that even queer community is transphobic kind of thing. So for you to come here and say this, it makes me feel really warm inside, and I would like to say thank you to you कि मतलब आपने Alright, sir. अपना सपोर्ट एक्सटेंड किया। Thank you. Thanks a lot for being a part. All right. So guys, it's time now to end this session. And मैं सबसे पहले आप तीनों से पूछना चाहता हूँ, how was your experience today? In few words, Utkarsh. It was good. It was good. It was a nice initiative from my story, and I think it is the very first step. And now you can promote your channel, Utkarsh. Now you can promote your channel. All right. So I think this is this is the beginning of this conversation, and I believe this is one of the most important things to start having the conversation. Like we had this person join us अभी जिन्होंने trans person के बारे में, trans people के बारे में बात करी.
तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि लोगों को सबसे पहले तो पता लगे, एंड यू नो विजिबिलिटी, एज रुशाली टॉक्ड अबाउट विजिबिलिटी, कि ओके ये लोग भी एग्जिस्ट करते हैं हमारी सोसाइटी में, इन ऑर्डर टू यू नो देन प्रोसीड कि हाँ नाउ एक्सेप्टेंस एंड यू नो रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, वो all चीजें यू नो दे ऑल देन फॉलो. फर्स्ट यू नीड टू एक्नॉलेज कि ओके दीस पीपल आल्सो एग्जिस्ट. एंड शॉर्ट में उत्तर थोड़ा, क्योंकि लाइव स्ट्रीम अपनी वीडियो क्वालिटी लूज कर रही है, थोड़ा शॉर्ट में देना सबको आंसर. अच्छा, ओके ओके, सो फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब Felis Fella. Felis Fella on YouTube channel. Subscribe to my YouTube channel. I make vlogs and story time videos. Hope you will like it. By the name of Felis Fella. Yeah. Rushali, what do you have to say? दोबारा करते हैं यार कभी ऐसे जल्दी. डन. हाँ, मैं कह रहा हूँ कि दोबारा करते हैं. डन. बस. एंड ओके, गर्वित आपको एक बार सब यही बोल रहे हैं, अगर आप few lines, Garvit, it's a request. Garvit, you are having a plenty of your fans out there. मतलब they want you singing, यार. Please sing. Again, comment आया. Please end this session with Garvit singing. Garvit singing, exactly. Garvit, go ahead. Okay, so I think Garvit is not in the mood right now. कोई नहीं, हम दोबारा ऐसे सेशंस आपके लिए लेकर आएंगे. एंड आज का सेशन बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, एंड इट वाज लाइक हमारा माइंड आज अच्छे से खुला है. हमें पता चला कि देयर इज नो नीड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, वी ऑल आर सेम एंड डिस्क्रिमिनेट करना भी नहीं चाहिए. सो गाइस, अगर आप लोगों को हमारे लाइव सेशन पसंद आया है देन जरूर इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर इट एज मच एज यू कैन. एंड अगले संडे हम लोग फिर वापस आएंगे अपने एक और सेशन के साथ, एक और अच्छे टॉपिक के ऊपर. सो थैंक्स अ लॉट फॉर बिकमिंग अ पार्ट ऑफ. थैंक यू सो मच गाइस. Thank you guys.